हे वेलकम बैक। तो आज हम इंग्लिश सीखेंगे बरखा दत्त के साथ। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इवेंट है जिसमें उन्होंने डिप्रेशन के बारे में बात की है कि कैसे दीपिका डिप्रेशन में चली गई थी और फिर कैसे उससे फाइट करके वापस आई। हम दीपिका के टॉक को अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ बरखा दत्त के इंट्रोडक्टरी स्पीच को देखते हैं, तो इसमें हम बहुत सारे वोकैबुलरीज और ग्रामर रूल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे with examples from movie scenes or TV series. So stay tuned because here we learn in a fun way, it's freakish way. First up, somebody who actually does not need an introduction. We know her from our cinema. She's one of our most celebrated actors. But she's somebody I admire for a different reason, in addition to her star power and her talent. She decided to go public with a deeply personal and intimate story on her own struggle with depression. In fact, in a 1-hour nationally televised interview with me. And then wanted to follow it up with concrete action. So actually created a foundation to help others who grapple with the same issues. And we also have here Dr. Murli Doraiswamy, one of the foremost neuroscientists and doctors from the United States of America, who spent a long time researching the science of the why, what, and how of depression and mental health issues. First up, somebody who actually does not need an introduction. We know her from our cinema. First up, सबसे पहले आप जब कोई सीरीज ऑफ टास्क्स शुरू करते हैं तो पहले टास्क में कहेंगे first up या first of all. Well, okay, first of all, Paolo and I are not back together. First of all, it's Professor Pitane. And second of all, that little bone proved that that particular dinosaur had wings but didn't fly. First up, somebody who does not need an introduction. सबसे पहले एक ऐसे पर्सन जिनको कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, जिनकी कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है. First up, somebody who actually does not need an introduction. We know her from our cinema. She's one of our most celebrated actors. Celebrated means मशहूर, famous, जिनकी सब तारीफ करते हैं, admire करते हैं. Example, Albert Einstein is one of the most celebrated scientists in the world. एक और वर्ड है celebrity, मतलब entertainment या sports के फील्ड में जो famous होते हैं उन्हें celebrity कहा जाता है. We know her from our cinema. She is one of our most celebrated actors. हम उनको सिनेमा के माध्यम से जानते हैं. वो सबसे ज़्यादा celebrated actors में से एक है. We know her from our cinema. She's one of our most celebrated actors. But she's somebody I admire for a different reason, in addition to her star power and her talent. Admire मतलब प्रशंसा करना या किसी चीज़ या इंसान की दिल से इज्जत करना. It would, but you know how much I admire preparedness. You know how much I admire preparedness. तुम्हें पता है ना मैं preparedness यानी हमेशा prepared रहने की जो habit है उसकी कितनी प्रशंसा करता हूँ या कितनी इज्जत करता हूँ. दोनों ही मीनिंग सही है. Yes, I've always admired that about you. I have always admired that about you. मैंने तुम्हारी इस आदत की हमेशा प्रशंसा की है या फिर इज्जत की है. But she's somebody I admire for a different reason, in addition to her star power and her talent. In addition to, हम हिंदी में कहते हैं ना साथ साथ, उसी को इंग्लिश में in addition to कहते हैं. एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझेंगे. मैथ्स के साथ साथ मैं साइंस में भी अच्छा हूँ. आई एम गुड एट साइंस इन एडिशन टू मैथ्स या फिर In addition to maths, I am good at science. वो इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ स्पेनिश भी बोल लेता है. He can speak Spanish in addition to English and Hindi. In addition to English and Hindi, he can speak Spanish. So in addition to being crazy, you're resting the fate of the mission on your athletic prowess. Yes. In addition to being crazy, you are resting the fate of the mission in your athletic prowess. पागल होने के साथ साथ तुम इस मिशन की फेट यानी उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस
अपने एथलेटिक क्षमता पर रख रहे हो। अगर हम इन एडिशन टू से टू को रिड्यूस कर दे तो इन एडिशन का मतलब होगा इसके अलावा। एग्जाम्पल, वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है, इसके अलावा उसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस भी है। आई थिंक हमें उसे रिक्रूट कर लेना चाहिए। ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। इन एडिशन ही हैज़ 6 years of experience. आई थिंक वी शुड रिक्रूट हिम। मेरे टीम में तुम और रवि हो। उसके अलावा मैंने अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स को भी बुलाया है। You and Ravi are in my team. In addition, I have also called some of my school friends. Who? What's the matter? I'm suddenly feeling flushed. My heart rate is elevated. My palms are clammy. My mouth is dry. In addition, I keep involuntarily saying, who? My heart rate is elevated. My palms are clammy. My mouth is dry. In addition, I keep involuntarily saying who. मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाथ में पसीना आ जाता है, मुंह सूख जाता है। उसके अलावा मैं अनजाने में who ये वर्ड कहता रहता हूँ। But she's somebody I admire for a different reason. In addition to her star power and her talent, she decided to go public with a deeply personal and intimate story on her own struggle with depression. डीपली पर्सनल मीन्स बहुत ही ज़्यादा पर्सनल। डीप का लिटरल मीनिंग होता है गहरा। इंटीमेट उसके 3 मीनिंग्स है। एक तो है बहुत ही ख़ास या क्लोज रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, हे डू यू नो राकेश? यस, ही इज़ एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरा एक ख़ास दोस्त है। दूसरा मीनिंग है, अगर आपका किसी लड़की के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है तो मतलब आपका उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है, which includes sexual intercourse. Physical intimacy इसका मतलब भी होता है sexual intercourse. और तीसरा मीनिंग है प्राइवेट या फिर पर्सनल। इंटीमेट सीक्रेट मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हो। I know most of his intimate secrets. तो अभी मैं आपके सामने 5 सीन्स पेश करूँगा द बिग बैंग थ्योरी शो से, जिसमें इंटीमेट वर्ड का यूज़ किया गया है। आपको आंसर करना है कि उनमें इंटीमेट का कौन सा मीनिंग है, और लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी होगा। तो आउट ऑफ 6 आपका स्कोर कमेंट ज़रूर करना। Sheldon, are we ever going to have an intimate relationship? What's the big deal? You guys are bringing your girlfriends. I didn't want to sit by myself. The big deal is I was expecting us to be an intimate group of 5. Now we're going to be a faceless mass of 6. Hundreds, and one night when she was feeling particularly randy, she used an intricate system of pulleys to have intimate relations with a horse. Penny's boyfriends, they broke up. Apparently he posted intimate details of their physical relationship on his blog, which I cannot find anywhere. Whatever. And then they held hands and did a sexy demonic hokey pokey for us. No, look, let me just say my story all the way through, and then you can say yours, and then we'll pick. I'm sorry, go on. Okay. We got tattoos, and then the 4 girls took us to their place. But we don't have tattoos. What if someone asks to see our tattoos? We say they're in a very intimate area. Oh, we are back. She decided to go public with a deeply personal and intimate story on her own struggle with depression. She decided to go public with a deeply personal and intimate story on her own struggle with depression. In fact, in a 1-hour nationally televised interview with me. In fact, का लिटरल मीनिंग है असल में या फिर इन रियलिटी। जब आप कोई स्टेटमेंट बताए
और फिर आगे एक और स्टेटमेंट बताए जो पहले स्टेटमेंट को और पुख्ता करता है, तब आप in fact का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल, क्या राज शादी में आया था? हाँ आया था, इनफैक्ट उसने मेरे साथ ही डिनर किया था। Did Raj attend the marriage? Yes, he did. In fact, he had dinner with me. Yes, I do. I really do. In fact, it's funny. Very often, someone who you wouldn't think could curl your toes might just be the one who Televise means टीवी में टेलीकास्ट होना या प्रसारित होना, बेसिकली टीवी में दिखाना। In fact, in a 1-hour nationally televised interview with me, and then wanted to follow it up with concrete action, so actually created a foundation to help others. Follow something up with something. मान लीजिए आपने वेट लॉस करने का डिसाइड किया, तो सबसे पहले आपने खाना कम किया और फिर साथ साथ डेली एक्सरसाइज करना भी शुरू किया। तो आप कहेंगे, When I decided to lose weight, at first I reduced the amount of food I consumed and then followed it up with daily exercise. Follow up with or by something यूज़ किया जाता है जब आप कोई एक काम करें और फिर उसके कंटिन्यूएशन में कोई दूसरा काम करें और उन दोनों में कोई तो रिलेशन हो। मतलब आपने एक बुरा काम किया, फिर उसको फॉलो अप करते हुए दूसरा बुरा काम किया, एक अच्छा काम किया, फिर उसको फॉलो अप करते हुए दूसरा अच्छा काम किया। On our marriage anniversary, I took my wife to lunch in a 5-star hotel and then followed it up with a long drive. Bernadette, Howard started it. I didn't do anything. I was just sitting here. I wasn't referring to this evening. 10 years ago, upon first seeing me, your husband claimed that I looked like C-3PO and Pee Wee Herman. And he called me C-3 Wee Herman. 10 साल पहले हावर्ड ने शेल्डन को C-3PV हरमन कहा। शायद कोई बुरा वर्ड होगा। He followed that up by replacing the slides from my lecture with photographs of nude fat women bending over. और फिर उसको फॉलो अप करते हुए उसने शेल्डन के वीडियो लेक्चर से स्लाइड्स को रिमूव कर दिया और उनके जगह नूड फैट वुमेन के पिक्चर्स लगा दिए। तो यहाँ भी बरखा दत्त कह रही है कि दीपिका ने पहले तो अपने डिप्रेशन की बात पब्लिकली बताया और फिर उसे फॉलो अप किया कंक्रीट एक्शन के साथ। And then wanted to follow it up with concrete action, so actually created a foundation to help others. कंक्रीट मतलब पुख्ता, कोई ऐसा चीज़ या एक्शन जो रिजल्ट दे, जैसे ठोस सबूत, वो सबूत जो एक्यूजेशन को साबित करे, so that will be a concrete evidence. कंक्रीट एक्शन वो एक्शन है जो कारगर हो रिजल्ट देने की। Hello, Kripke. Yeah, Sheldon Cooper here. It occurred to me that you hadn't returned any of my calls because I hadn't offered any concrete suggestions for pursuing our friendship. कंक्रीट सजेशन मतलब कोई ठोस सुझाव जो काम आए। And then wanted to follow it up with concrete action, so actually created a foundation to help others. क्रिएट ए फाउंडेशन मतलब आधार रखना, बुनियाद रखना। जैसे कि एरिस्टोटल ने बायोलॉजी की बुनियाद रखी थी। उसने पहली बार जीवों के स्ट्रक्चर, उनके वर्किंग प्रोसेस के बारे में सोचा था, जिससे दुनिया के सामने एक बुनियाद रखा कि वो भी इसके बारे में आगे सोचे। सो एरिस्टोटल क्रिएटेड अ फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। एक और एडिशनल एग्जाम्पल है, निकोला टेस्ला created the foundation of a world with renewable energy, and Elon Musk is following it up with his Tesla motor and solar city etc. तो इस केस में भी पहले इंडिया में लोग डिप्रेशन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, बट दीपिका ने पहली बार उसे पब्लिकली बताया और उसका ट्रीटमेंट करके एक फाउंडेशन रखा कि लोग उसको सीरियसली ले और उसकी ट्रीटमेंट करें। So actually created a foundation to help others who grapple with the same issues. ग्रैपल मतलब फाइट करना, लड़ना। मोस्टली वो लड़ाई को दर्शाता है जो हथियार के बिना लड़ा जाए,
या बेसिकली जो मानसिक लड़ाई है उसी में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, आफ्टर ग्रैपलिंग विद कैंसर फॉर मोर देन 3 years, Rishi Kapoor finally left us. Deepika Padukone has been grappling with depression. India is grappling with economic recession या फिर economic depression. So actually created a foundation to help others who grapple with the same issues. And we also have here Dr. Murli Doraiswamy, one of the foremost neuroscientists and doctors from the United States of America. Foremost means जो सबसे ऊपर हो, rank, importance या position में. एक और commonly used phrase है first and foremost, मतलब सबसे पहले और सबसे important. Example, एक स्टूडेंट का सबसे पहला और सबसे important duty है पढ़ना. First and foremost duty of a student is to study. I was Krypton's military leader. Your father, our foremost scientist. And we also have here Dr. Murli Doraiswamy, one of the foremost neuroscientists and doctors from the United States of America. Neuroscientist. Neuroscience साइंस की वो फील्ड है जिसमें नर्वस सिस्टम या फिर सिंपल भाषा में कहे तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है उसकी स्टडी की जाती है. तो उस फील्ड के एक्सपर्ट को न्यूरोसाइंटिस्ट कहा जाता है. न्यूरोसाइंटिस्ट अलग होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट से. न्यूरोलॉजिस्ट वो है जो उस बीमारी से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, और न्यूरोसाइंटिस्ट उस फील्ड में स्टडी करते हैं. तो अगर आपको डिप्रेशन या फिर कोई मेंटल इलनेस हो तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नॉट न्यूरोसाइंटिस्ट, या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं. First up, somebody who actually does not need an introduction. We know her from our cinema. She's one of our most celebrated actors. But she's somebody I admire for a different reason, in addition to her star power and her talent. She decided to go public with a deeply personal and intimate story on her own struggle with depression. In fact, in a 1-hour nationally televised interview with me. And then wanted to follow it up with concrete action. So actually created a foundation to help others who grapple with the same issues. And we also have here Dr. Murli Doraiswamy, one of the foremost neuroscientists and doctors from the United States of America, who spent a long time researching the science of the why, what, and how of depression and mental health issues.